स्वदेशी संस्कृति के संवाहक हैं। आपसे निवेदन की मंच पर मध्य में अपना स्थान ग्रहण करें। प्रतिभागियों में डॉक्टर सी के राजू आमंत्रित हैं। डॉक्टर सी के राजू को गणित और भौतिकी के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विशेष रूप से आपको 2010 में हंगरी में टीजीए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच पर आप सभी के समक्ष सी के राजू। श्री अविनाश धर्माधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, जिन्होंने चाणक्य मंडल परिवार की स्थापना की। श्री धर्माधिकारी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुनाव लड़े। नेहरू युवा केंद्र संगठन के महानिदेशक के रूप में आपने कार्य किया। आप अश्वत्थ दशाकाची डायरी के लेखक भी हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद डायरी ऑफ डिकेड ऑफ नादिका एगोनी के रूप में किया गया। मंच पर श्री अविनाश धर्माधिकारी। आपके बाद श्री नीलेश नीलकंठ ओक। नीलेश नीलकंठ जी एक शोधकर्ता, लेखक और वक्ता हैं। आप प्राचीन भारतीय ग्रंथों के कालक्रम पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से रामायण और महाभारत पर। आपने द हिस्टोरिक राम, व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपन, इस तरह की कई किताबें लिखी हैं। श्री नीलेश नीलकंठ ओक मंच पर अपना स्थान ले चुके हैं। अगले नाम श्री वेदवीर आर्य, प्रख्यात समाज सेवक और भारत के रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और शोधकर्ता जो भारतीय लेखन और इतिहास में अपने व्यापक कार्य के लिए जाने जाते हैं। आपकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर आपके लेखन में और आपके काम में झलकती है। मंच पर अपना स्थान ले चुके हैं श्री वेदवीर आर्य। आपके बाद श्री संदीप बालकृष्ण, आप भारतीय इतिहास और संस्कृति पर ऑनलाइन पत्रिका के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं, जिसे धर्म डिस्पैच कहा जाता है। आपने 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें लिखी हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत श्री संदीप बालकृष्ण। डॉक्टर राज वेदम एक सफल अकादमिक और वक्ता हैं जो भारतीय सभ्यता के इतिहास और प्राचीनता में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। अनुप्रयुक्त गणित और अभियांत्रिकी के पृष्ठभूमि के साथ आप पुरातात्विक अनुवांशिकी और पुरातात्विक खगोल शास्त्र और पुरातत्व से उत्पन्न तकनीकों का उपयोग करके प्राचीन भारत के पारंपरिक कथनों को चुनौती देते हैं। मंच पर अपना स्थान ले रहे हैं डॉक्टर राज वेदा। इस चौथे सत्र के स्पॉन्सर हैं एक बुक लॉन्च कर रहे हैं, थर्ड रिपब्लिक, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गवर्नेंस टू अ मॉडर्न धार्मिक स्टेट। ये किताब संक्रांत सानू जी ने लिखी है। I'd like to invite my co-author Priyank Bharadwaj. आपके को-ऑथर प्रियांक भारद्वाज जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे और सभी पैनलिस्ट के द्वारा इस पुस्तक का यहाँ पे विमोचन, थर्ड रिपब्लिक, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गवर्नेंस टू अ मॉडर्न धार्मिक स्टेट। सो वैसे ये इस पुस्तक का प्री लॉन्च है, और प्री लॉन्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कठिन विषय है। कठिन इसलिए, और किसी ने पूछा, संजय जी मुझसे पूछ रहे थे कि थर्ड रिपब्लिक क्यों बोल रहे हो, तो थर्ड रिपब्लिक इसलिए क्योंकि एक रिपब्लिक और एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमारे पास था, जिसको आप हिंदू स्टेट कह सकते हैं एक समय का, और उसके बाद अलग अलग वर्जन्स ऑफ अ कॉलोनियल स्टेट हमारे ऊपर लागू कर गए, जो आज तक चल रहे हैं। अभी भी एक कॉलोनियल स्टेट की कंटिन्यूएंसी चल रही है। तो पहला रिपब्लिक था हिंदू रिपब्लिक, दूसरा रिपब्लिक था कंटिन्यूअस कॉलोनियल स्टेट। लेकिन जो तीसरा हम हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं, हम पहले रिपब्लिक पर नहीं जा सकते, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते अब राजा राजाओं को लाएंगे, उस तरह से काम चलेगा। तो हमको एक नई संस्थापना करनी पड़ेगी, एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा जो आज के लिए उपयुक्त है। तो इसीलिए उसका नाम थर्ड रिपब्लिक रखा है। और इसका प्री लॉन्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप में से यहाँ बैठे हुए बहुत लोगों को के सुझाव भी होंगे इसके बारे में। तो आप अवश्य सुझाव भी अपने भेजिए और संपर्क कीजिए। और मैं 2 मिनट कहूंगा प्रियंक जी भी इस बुक के बारे में कुछ बोले। और ये प्री लॉन्च का URL QR कोड वहां पर है, आप उसको स्कैन कर लीजिए। जो भी उसकी प्री लॉन्च कॉपी ऑर्डर करेगा, तो लॉन्च होने से पहले हम उनको एक रिव्यू कॉपी भेजेंगे, जिससे वो टिप्पणी दे पाएंगे, जो हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे फाइनल बुक में। सो थैंक यू। Thank you, Sankraji, and thank you to the panel. आपने 2 मिनट दिए इस टाइम पे. Just to give a quick story around the book also, I'll give a quick example.
1500s, Paris was a very known city, right? In Europe, it was a center of art, music, culture. But there was a unique problem Paris had. There was a huge sanitation problem. Slaughterhouses used to be putting the excrement out on the streets. People used to empty their human waste into the streets. People used to be able to smell Paris miles before they could see Paris, right? And the king made an edict. He said everybody had to go and wash the streets. Every person had to go outside, step out, wash the street every day. And as you can imagine, that did not work. I bring that up because when I was coming to Jaipur, I saw around, I think, Gandhi Jayanti, there was a Swachhata, कार्यक्रम चल रहा था, where Modi ji is, exhorting all of us to clean, which is very important. But it's also absolving the state of its responsibilities to do its part, right? So when Sankranji talks about a colonial state, what we have today are the structures of colonialism still present. So aap dekhen all the way from the constitution, which is a lift and shift mostly of a government of India Act of 1935, judiciary, the civil service to a great degree. हम सोचते हैं कि हम Western frameworks use कर रहे हैं, but they're actually colonial frameworks that we are using today. So book के 3 main section हैं. One goes over these, I'll say problem statements. तो क्या क्या जो हम अभी जो colonial frameworks हैं जो impact कर रहे हैं day-to-day life, including the lack of non-local accountability and ownership. तो जैसे आप cleanliness की बात करते हैं, roads की बात करते हैं, ये चीजें local ownership होती हैं. And we don't have that today. And then the second part goes, as Sankranji talked about, how did the Hindu states in the past actually function? What lessons can we learn from that? And then the third goes into the actual prescriptions. So moving forward, what are the types of solutions to lay out a blueprint for a dharmic state moving forward? So look forward to all of your support and thank you. Thank you so much, Priyank. प्रियंक न्यूयॉर्क से उड़कर आए लॉन्च के लिए और अभी उनकी फ्लाइट है, तो उनको थोड़ा सा समय देने के लिए बहुत बहुत आपका आभार. ताड़ियों से प्रियंक. चलो, सो इस सत्र की शुरुआत करते हैं. तो सत्र का शीर्षक दिया हिस्ट्री एंड एजुकेशन. हिस्ट्री एंड एजुकेशन. तो सबसे पहले तो मेरा सवाल पैनल से भी और मुझको भी ये सवाल आ रहा था कि हम एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं या हम एजुकेशन में हिस्ट्री पढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं. तो दोनों ही सवाल महत्वपूर्ण है. भारत में एजुकेशन की हिस्ट्री क्या रही और हिस्ट्री आज कैसे पढ़ाई जा रही है और हिस्ट्री की समस्याएं क्या हैं. तो I'll start with Raj Vedamji. Maybe you can start with shedding some light on the topic and we'll go forward from there. On history and education. Yeah. So if we take a look at the way history has been written in India, we have always been happy with the version of history that we have, which means things like the Puranas, the Itihasas, Thala Puranas, epigraphy in temples, the folklore, stories that we have, the songs that we have, the genealogies of families. This is the version of history that we have had for a long time. But the British, when they, I'll use the word invaded, when they invaded India, they were the ones who wanted to try to interpret everything in India in what is called the Whig interpretation of history. They wanted to see everything in India through the moral prism of Christianity. Christianity as a force, they wanted to see that. So we see the first impact from the British, the colonialists, in terms of looking at India as a backward, primitive, superstitious, stagnant society, and to present Europe as forward, progressive, technologically advanced society. So we see the framework of history came right from there, from the British, followed very soon by the missionaries, wherever the colonialists, when the British were not far, the missionaries were not far behind. So they were at the forefront of translating the Sanskrit literature into European languages, and they brought in their own set of biases to show, again, Indians as superstitious, and to convert them to Christianity, atrocity literature, all these kind of things. That was followed by the Eurocentric forces, the people who wanted to explain why are Sanskrit, Latin, and Greek related, William Jones and people like that. So in order to explain that, they proposed this idea of a Proto-Indo-European language. And from there on, a whole host of Eurocentric ideas came, thanks to which
India had to suffer a so-called Aryan invasion or migration in 1500 BCE. And this effectively constrains everything in Indian history. Every single aspect that you see in our Indian history is constrained by this 1500 BCE. Today, if we have Puranic literature or Brahmana or Upanishads where we can find astronomical evidences of great antiquity, guess what? They'll say that's all unreliable. This is what Max Muller said. Everything's unreliable because India could not have had this kind of literature prior to 1500 BCE. They say Vedas are composed in India because the Vedas have got geographical identifiers of rivers, of the mountains, and so on. It could not be composed in Central Asia by the Aryans. Aryans came to India, composed the Vedic literature, which means you cannot have antiquity before 1500 BC. So what you're saying is it basically corrupts every aspect of our chronology. Everything is gone. Then, unfortunately, in 1947, you might think sense has prevailed finally on the Bharatiya civilization. Somebody said we made a tryst with destiny, but unfortunately, the tryst was something which disconnected us from our roots, completely disconnected by bringing in the socialist. We had the socialist lens in India, and followed pretty soon in 1972, thanks to Indira Gandhi, we have the Marxist perspective also. So 5 frameworks control the historiography of India: the colonial, the Eurocentric, the missionary, the socialist, and the Marxist. Today, into the toxic mix, you also find Islamism and wokeism. They've also come, but they're offshoots of the same Marxist leftist ideologies. But these are the ones controlling the framework of history. Even today, whether it is in NCRT, whether it is in United States or any left academia throughout the world, we see Indian history is corrupted because of this. Thank you. Thank you. I think it'll be good if we have some opening statements, maybe in 3 to 5 minutes, so we can loop back and have another round. So, Nilesh, you have done such an extensive work in reworking the dates of history, especially of our epics of the Ramayana and Mahabharata, and even earlier. And one of the things, I remember from a school perspective, my own experience has been that there is such a disconnect between the stories that we hear at home or the stories that come from our tradition and what we study in the school textbooks. In fact, there is no relationship whatsoever, right? In the stories in home, we hear about Bhagwan Ram, we hear about Krishna, we hear about all these things, Raja Bhoj. We open our textbooks and we don't hear any of those things. There is no Ram, there is no Krishna, there is no history. And it starts from some random fragments that they've picked up. So my question to you is, given all of the work you've done in chronology and all that, how do we actually start to translate it into a complete history all the way to modern times? And what does that process look like, and how will we make an impact? Yeah. Dhanyavad. Thank you to everyone. About 6 years ago, I was invited to present 2 papers, very revolutionary papers. That's not a subject today, at a conference in Oxford. So it's a very good format. Like you get to present like a TED talk, like for 20 minutes, 2 people, and then they give you 90 minutes to basically grill those 2 speakers. It's a wonderful format. So when my presentation was done and this 90-minute session started, which is basically there are chips and some fruit and drinks, and then now you discuss for 90 minutes in an open format. One professor from University of Chicago very angrily came at me, literally, darting at me, saying, but you don't have history, because the 2 papers I presented, I was talking of 12,000 BCE and 8,000 plus BCE. And he said, you don't have a history. That day I was in a good mood. So I said, you are right. We don't have a history. We have a itihas. Now, this is not just semantics or wordplay, because his itihas means very different than a history. There are common elements to it. So quickly, we must understand the definition. In the morning session, Satish Sharma ji ne kaha, instead of spending time in the rebuttals and back and forth, we just present our view, our narrative, and not waste time even discrediting their narrative. I agree with that. So what is our definition of a itihasa? Dharmartha kama mokshanam upadesham samanvitam purva vruttam katha yuktam itihasam prachakshate. It's a guidebook. It's a margadarshak book
okay, where we take an ancient event and we present it in a rochak form. That's why the Katha Vruttam, okay, and that is called Itihasa. And what is the objective? It becomes a guidebook, just like we have the case studies in law or a business or a medicine for dharma, artha, kama, moksha, to achieve the four purusharthas. So in this context, if we have to bring this back, my point is, let's not even look at what is written in the textbook. The way we understand in the sense of, to the best of our ability, it is defined by the evidence with modern science. But when I say modern science, immediately people say, oh, why go for modern science? Because many of the Indians, Americans or Western guys don't have this problem. They think science is there. So if you explain something with the evidence, they immediately understand. People ask me, Nilesh, how would you explain the Western audience? I said, I lived there for 34 years. I never had a problem convincing them. It is the doubtful Indian who has a problem. So what do? We cannot always expect to know everything. That will be basically a foolish expectation. Maybe with time we will know, but there are specific things, such as, say, take our history, Itihasa, I'm using it interchangeably, Ramayana, Mahabharata. We have tremendous evidence. Even Rigveda we can tell a lot. Charaka Samhita, like say, Ayurveda text, we know a lot. Astronomy text we can know a lot. And there is actually enough, Rigveda, all the text I mentioned, to basically define in a very comfortable way evidence-based history of Bharat going back to at least 75,000 years. And that is the project I'm working on. 75,000 years. Thank you. Thank you, Nilesh. And I think this is one of the challenges we actually deal with a lot when we talk about those timelines, which is that the Western models that have been passed to us always have a very compressed timelines that only start like a few thousand years maximum before BC. So whenever we talk about history of 75,000 years or more, actually, everybody's eyes roll up and saying, no, this is not history, this is pseudoscience, and this is religion. It's not really based on any evidence. But the actual fact is it's the other way around. One of the reasons why the West was so hung up on history only being a few thousand years BC is that for most of the 18th and 19th century, where the British colonialists are writing our history, they believed it was biblical truth that the world started in 4004 BC, according to Usher's calculation. So there was this James Usher, the Christian priest, who had calculated based on the Bible's generations exactly when would be the date of creation of the earth, and he had said 4004 BC. Obviously, the Bible is the biblical literal truth. So since the Bible is the literal truth, anything that presumes anything which is older than that obviously must be pagan superstition, right? So there it all must be garbage, it must be pagan superstition, and these Hindu Brahmins are very cunning, so they invent all these dates, just to mislead and fool the people. But obviously everything is much more recent. So in a way, what Nilesh is saying is very true, which is we have to throw away the books that have been written and we have to kind of start from scratch. These people invented all these theories, the Aryan invasion theory, this theory, that theory, and now we are all building on that. But we have to kind of start from scratch, look at the primary evidence once again, and restart to reconstruct the history. And I don't know, Vedbir Aryaji has done a lot of work on the chronologies of history. So please shed some light on that. And also, what is the dramatic difference between Western chronologies and what you have found in your research? सबसे पहले जयपुर डायलॉग्स को ये मंच प्रदान करने के लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। आज का विषय है इतिहास की सही शिक्षा के माध्यम से भारत के गौरव को पुनः प्राप्त करना। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं, हम सबने सुना है कि ब्रिटिश राज के समय में 45 ट्रिलियन की भारत की आर्थिक क्षति हुई थी। हम उस क्षति को सही करने के लिए एक दिशा ले चुके हैं। अब हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन एक ऐसी क्षति हुई है ब्रिटिश राज में जिसको हमने आज तक उसका अनुभव नहीं किया, वो भारतीय इतिहास की क्षति है, भारतीय की इतिहास की प्राचीनता की क्षति है। इसके लिए केवल ब्रिटिश राज ही जिम्मेदार नहीं है, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने उस अपनी परंपरा, अपने इतिहास के सत्यता को स्थापित करने का परिश्रम सही ढंग से नहीं किया, सही दिशा में नहीं किया, इसलिए आज हम इस स्थिति पर हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या, जब हम इतिहास की सही शिक्षा की बात करते हैं तो दो पक्ष होते हैं। एक, नरेटिव को ठीक करना, ये आधुनिक इतिहास और मध्यकाल के इतिहास तक सही होता है, लेकिन प्राचीन इतिहास में हमारे कालक्रम को इतना विकृत हो चुका है कि उसको सही नहीं किया गया तो फिर नरेटिव कुछ बनेगा नहीं। हम कहते हैं भारत विश्व गुरु सभ्यता थी, लेकिन शिष्य सभ्यता पैदा होने के बाद गुरु पैदा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इस पर किसी ने सोचा है आज तक? क्यों? क्योंकि अभी बुद्ध से पहले जैसे ही जाते हैं, आधुनिक इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट उसको प्री हिस्टोरिक मान लेते हैं। कुछ भी खुदाई करते मिलते हैं तो ये कोई कल्चर है, कोई कभी ये नहीं कहते कि ये भारतीय सभ्यता है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है इतिहास क्या है, क्योंकि ना तो उनको पारंपरिक जो विद्या है संस्कृत की उसका ज्ञान है, क्योंकि आप इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको अनुसंधान करना है तो जो भारतीय साहित्य है, भारतीय अभिलेख है और जितने भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, वो संस्कृत और प्राकृत के माध्यम से ही संभव है। लेकिन 99% जितने भी इतिहासकार हैं उनको इनका ज्ञान नहीं है, तो ओरिजिनल रिसर्च संभव ही नहीं है जिस तरह का तंत्र पढ़ा। और एक समस्या है कालक्रम में, कहां से समस्या है? क्योंकि हर एक सभ्यता की अपनी एक पारंपरिक कालक्रम और इतिहास था, लेकिन पिछले 300 वर्षों में जो रिनेसांस यूरोप के बाद एकेडमिया पर वेस्ट का जो प्रभुत्व हुआ है, वो चाहे एक साइंटिफिक माध्यम से सोशल साइंसेस पर स्टडी करने के लिए आगे बढ़ रहे हों, लेकिन वो बाई बर्थ क्रिश्चियन से, तो उनका माइंडसेट बाइबल से जुड़ा था। उनको था कि 4000 बीसी में ही एंटायर क्रिएशन हुआ है, तो उसके बाद 1000 वर्ष के बाद फ्लड आया है, फिर उसके बाद ही सारा सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस संभव है। तो इस मानसिकता से जब सारे सभ्यताओं के कालक्रम का जो अध्ययन करना स्टार्ट किया उन्होंने, जो भी 3000 बीसी से आगे चला जाता है उसको माइथोलॉजी करके डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने क्या किया, आर्कियोलॉजी करते हैं तो क्या वो रिलेटिव क्रोनोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी करते हैं, तो उसमें लेयर्स का तो रिलेटिव क्रोनोलॉजी हो गया, हर एक लेयर की डेटिंग कहां से होगी, जो इन्होंने एज्यूम कर रखा है। क्योंकि कार्बन डेटिंग तो 1950s के बाद उसका आया, वो भी सीमित है, केवल ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, तो जहां तक पोटरी और जो कुछ मिलता है उनका आप डेटिंग कैसे करेंगे? आप एक रिलेटिव क्रोनोलॉजी की जो एक आपने बना रखी उसी के आधार पर चलते हैं। वो रिलेटिव क्रोनोलॉजी का एक टूल किट है जो आर्कियोलॉजी के पास है। तो हमें बहुत सारे ऐसे आधुनिक साइंसेस हैं, जैसे आर्कियो एस्ट्रोनॉमी है, आर्कियो जेनेटिक्स है, और उसके बाद जितने भी आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन हुए हैं उनको अगर हम कालक्रम के आधार पर स्थापित करें, उसको आर्कियो जेनेटिक्स के साथ संबंधित करके फिर लिंग्विस्टिक्स एविडेंस को साथ में लेके आए, तो हम एक सही भारतीय कालक्रम और भारत से जो माइग्रेशन हुए हैं वो करेंगे। अगर हमने आज तक ये इस दिशा में प्रयास नहीं किया तो हमारी क्षति को आपने कभी ये एहसास नहीं किया कि हम साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन में बट गए हैं, एक आक्रांता है, दूसरा मूल निवासी है। और आजकल एक तमिलनाडु में आर्कियोलॉजिकल कुछ फाइंडिंग्स हो रहे थे, कुछ लोग तमिल सिविलाइजेशन की भी बात करने लगे। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने एक सही कालक्रम और भारतीय परंपरा को छोड़ करके केवल एक स्पेकुलेशन बेस पर जो इतिहास लिखना प्रारंभ किया है, वो भारतीय इतिहास के साथ बहुत अन्याय हुआ है और हम दिशा से भटक गए हैं। हमें सही दिशा में आना है, उस उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए ये मंच आज इसलिए प्रदान किया है। धन्यवाद वेदवीर आर्य जी। और कभी कभी प्रश्न उठ जाता है जब मैं अंग्रेजी में बात करता हूं कि मैंने तो अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल पुस्तक लिखी, तो अंग्रेजी में संचालन क्यों कर रहा हूं। लेकिन पैनल में ही कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उनके लिए हिंदी थोड़ी कठिन है, तो इसलिए अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हैं आज थोड़ी। तो संदीप, I'd love you to for you to add to this, particularly this notion of scientific history, because they claim that the other side makes is they have access to scientific history, and what we are creating is
pseudoscience, nationalistic, all of this kind of thing. So how do you respond to that? Yeah, thank you. Great to be back here, and thanks for your question, Sankrant. Look, all these things are labels. Okay, this is all riffraff. Just distill it down to the bare bones. Pseudoscience है, ये mythology है, वो है. The primary purpose of history is a quest for truth. आप जो methods adopt करते हैं उसको उस truth को निकालने के लिए, okay, you might differ, but if it helps in establishing the truth, that is history. As simple as that. तो ये सब history के instead of digging out, real facts of the past, what we have done, especially in the last, let's say 60, 70 years, is that we have built theories upon history. Instead of doing actual solid historical research, you build theories on, what is the acceptable version of history or Marxist history. What do you mean Marxist history, man? Look, you cannot be a historian and a Marxist at the same time. It's an oxymoron. It is communist pamphleteering. जो मार्क्सिस्ट ने लिखा है वो कम्युनिस्ट पैम्फलेटियरिंग है. So what does the past tell you about itself? And how you approach it, it could be whatever, as other gentlemen said, carbon dating or jo bhi ho. Okay, if it helps you arrive at the truth of a historical event or a person or a place or any other happening, and so be it. So it has to be a disinterested, detached quest for truth. That in my view is history. But then we have come, okay, somebody was mentioning about the colonial explorations in history and how they distorted. Yes, I agree. And what happened was that I think Mr. Raj Miveda made his opening remark about this, that when the British came, or rather Europeans came, the missionaries followed. Actually, they came together. Now, if you look at a guy like Thomas Roe, just a random kind of example. So he was the first person to land in the Mughal court, in the court of Jahangir. You know what is the first thing that Thomas Roe taught Jahangir? He taught him to manufacture beer, which was unknown to India. And along with travelers like Thomas Roe, there would, every ship that went on a voyage to India, to the East Indies, as it was called, they were accompanied by chaplains, meaning padris, Christian pastors. So long voyages, you need some moral guidance for the pious Christians traveling on those things. So each of them have left their own account. So one of the most understudied periods of Indian history, which is tragedy, which is a tragedy because there's such abundant material. You study the history of India for the last 250 years, it will be eye-opening. You will be shocked and surprised to learn that yehi hamara Hindu Samaj wo tha. You have lost access to that past. And you will get a full, clear, first-hand picture from these voyages of all these colonial accounts of colonial travelers. So after British never conquered India. They gobbled it up in pieces, bits and pieces, because of our own incompetence and foolishness in fighting the rest of it. It's a sad commentary on the state of our own people. I mean, you can't run away from that historical truth. You see, this is how you excavate the truth. When the British gobbled away India piece by piece, what they did to maintain their hold, their colonial hold, was to dig out history of India as written by Indians themselves, piece it together, and basically build a narrative which would justify their oppression. कि हम आपको इसलिए ऑपरेशन कर रहे हैं because we are torturing you for your own good. Just like how Mother Teresa allegedly cured, her sick patients. So what they did, Robert Sewell is a classic example. So he is the first person to write a semi-comprehensive history of the Vijayanagar Empire. Robert Sewell, for the record, was not a trained historian. He was a civil servant. He was
mid-ranking bureaucrat in the Madras presidency in charge of record keeping. Record keeping matlab whatever activities that the British did, excavations, archaeology, collecting of various old documents, archival material, coins, jo bhi hai, all the findings would be meticulously maintained in registers and cupboards and different places. So in Madras presidency, Robert Sewell was the person in charge of doing one small department of that. Then when he began touring all of South India, collecting these, doing excavations and findings, that is when he came across the fact that there existed a glorious empire called Vijayanagar. But what is his conclusion? Why he did that? He did all these activities in order to justify that, look, however great your great Hindu kingdom of Vijayanagar was, but it fell only because you are a barbarous race. All your Reddys and your Rajas and your Naiks fought with each other. And we, as the great liberators from outside, came and rescued them. And that's why we are ruling you. And that's why you should be grateful to us. This, in other words, is also known as a white man's burden. And this justification ties in all the way logically back to a hoax called the Aryan invasion theory. The point is, if you accept Aryan invasion theory as valid, it means that हम हिंदुओं को अपना individual अस्तित्व नहीं था, कभी नहीं था. You were always invaded, first by the Aryan invasions from Central Asia, then by Huns, then Shakas, Kushanas, and who else? Muslims, and now by us. So you have to start shifting history from these things. Dates and that's not a place I want to go right now. But our view of history, the Bharatiya view of history is two things. One is a fact, the other is a value. Fact, matlab, ye water bottle hai, this is a fact. What is value is not the water in it. There is water in the water bottle, but this gentleman is thirsty. And without him asking me for water, I give it to him. So there I display a value. So ye hota hai. This is our view of history as a value. Puranon mein jo gathaएं लिखता है ना, there are 5 Puranam Panchalakshanam. So there are 5 elements in Puranas. I'll just condense the whole thing. Point is, you are narrating the history of X or Y event or some dynasty or some episode through stories which bring out both the good values and the bad values. कि ये अगर करेंगे तो इसका outcome ये हो गया. So this is, we have to be very clear about this approach, and I'll stop my submission here. Thank you, Sandeep. One of the interesting things you brought out from your perspectives, this history is a quest for truth. And actually here I'm going to disagree in the following way, that this is not really how the history emerged in the West. In the West, history is primarily a tool for propaganda, right? And how did that happen? Because the initial studies of history, actually, in fact, most of initial academia in the West is rooted in the church. And for the church, proving certain things and disproving certain things had value for the sake of propaganda, not for the sake of truth. Right? Because it had value for the sake of propaganda, and the fact that everything that must be discovered must ultimately only conform to the Bible, which is the gospel truth. This is where the phrase gospel truth in English comes from. The Bible is gospel truth. Of course, you cannot question that. And anything that we discover in history could only prove the truth of the Bible. So a lot of the foundations of Western history are actually rooted in propaganda. And similarly, when the dual of the Western Christianity came into being, which is the sort of secular atheist communist movement, the substratum is the same. So for communists too, the main purpose of history is not the discovery of the truth, but for the creation of propaganda. It's propaganda. I forget the name of this
one famous US politician who's given us a memorable quote about history and politics. And he says that the first person of he says that the first lesson of politics is to forget the first lesson of history. Yes, yes, exactly. So, and of course, the other part is that we always hear this phrase, the history is written by the victors, right? So, whoever, when the colonial powers came, they had a particular imprint of history and they had an agenda for the purpose of propaganda, which is they wanted to establish their superiority. They wanted to establish in the Aryan invasion theory, when they found the linkage between Sanskrit and the European languages, they couldn't, of course, say that Indians taught the Europeans or this came from India. So it was necessary for them to create the Aryan invasion theory to preserve their sense of superiority. So for us, it's always a difficulty, and this also came up in the discussion on narrative. Why are we so bad at the narrative war? Why are Hindus so bad at the narrative war? One of the reasons is that because we can't think dirty primarily. no, because we think it's a quest for truth. Absolutely. We think we are searching for truth, but that's not what the other side is searching for, right? So till we realize that for them it is a narrative, for them it is a propaganda, and they will use, I mean, the Bible, the church has so many instances where they completely forge documents, historical documents. They completely forge the fact that Constantine so-called left them a big tract of land, which never happened. They make a complete forgery and then took over that land. So it was never for the purpose of actually finding a truth, but for propagating power and using propaganda to maintain and propagate that power. So coming back to the topic again, history and education is our topic. So Avinash ji, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जमीनी काम बहुत किया है, बच्चों के साथ बहुत काम किया है, उनकी तैयारी में, उनकी पढ़ाई में, और भी कई विषयों को लेकर. तो आपकी दृष्टि में जो ये हिस्ट्री और एजुकेशन का जो मेल होता है और उससे बच्चों पे क्या असर होता है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए. धन्यवाद. Namaste, of course, everyone. All best wishes always for everyone. The general tone of this session seems to be in English. I have already done enough to prove that I can speak in Hindi in the morning session. So now, at least for a while, I will try to prove that I can speak in English also. Overall, the tone being we are discussing history, I also want to take opportunity to express happiness at being with the really esteemed panel who are doing a great job in setting our history correct, telling it to people. This has to be an intellectual job, seeing eyeball to eyeball with whatever is the scholarship that distorts our history. I will also make my points in the light of the points that have been made so far, so that I happen to contribute to the discussion. As I was listening and thinking, I thought it like jazz music concert in Hindustani classical. That is, everyone comes up with one's own tone. The next speaker picks up that tone and adds with one's own, setting a whole beautiful symphony, I hope. I just add to the beauty of the ongoing symphony. At the start, Srikanji discussed history and education, and a little bit of discussion on, say, prepositions. Is it history of education? Is it history in Indian education? Or is it history and education, any which way we define? It so happens that by now we seem to be focusing on history in education. So if in the latter part, I look forward to that part also. If history and education comes up, there would be point I want to share about education also. But right now, even I will restrict myself to just a few statements on history in light of the discussion that has gone on. One thing is our own
Bharatiya word itihas itself is the best definition of history. So there are hundreds and thousands of pages written on what is history and how do you define. I will of course save all that time by just saying and pointing at the beauty of Sanskrit and the depth of Sanskrit, that every single word has a very logical explanation of how and why it came up. Even on modern linguistic parameters about semantics and about phonetics and grammar, etc., Sanskrit continues to be like the best on every count. This term itihas itself also proves it. It is iti adhik ha adhik asa is, this is how it happened. As briefly as I want to say what it means is that we also go into the question of causality, not just telling stories of the past. Going by the word, the term history in English would mean stories of the past. But here we are with a very deep and profound word itself of itihas. This is how it happened. So we go into the question of causality. That is where Sandeep ji has set us on a very deep and beautiful, happy path by saying that, of course, history is search for truth. That there might be different methods of search for truth. History is one such method. And of course, our commitment has to be to truth with capital T, since we believe Satyameva Jayate. There might be different perspectives of understanding that truth. So like when now we come to study of Bharatiya Itihas, yes, in the modern times, the colonial history distorted our history beyond recognition. Deeper tragedies, we started believing that. And then when they left this country, they ensured that the rulers who would continue their every line, ideological line, political line, etc., etc. So the mantle of colonial historians happens to be picked up by Marxist historians of Indian history. I'm being very specific. Indian Marxist historians of Indian history, probably with all due respect, with an exception of D.D. Kosambi, others are nothing but, like Sandeep has already described very aptly, the pamphleteers. It's not possible to call them historians. For want of time, the only example I'm picking up is that of Romila Thapar, who claims to be expert in history of ancient India without knowing Sanskrit. How can you be a historian of a period? How can you be historian of a period when you don't know the basic language in the documents of that period are made? So the task of distorting Indian history has been done on industrial scale. It's not like competent people did not come up to give their answers. That is part of even my happiness, that for all last, you can call them 200, 250, 300 years, every time someone tried to distort Indian history, there have been giants of intellectuals in Bharat who stood up to them and told the truth. So right when Aryan invasion theory was being created, there are historians and thinkers, including everyone from Vivekananda and Sri Aurobindo, to what I consider as greatest of our blessing is none other than Baba Sahib Ambedkar rejected the theory of Aryan invasion. From there onwards, to this broader narrative that, okay, there is nothing like India, so there is nothing like Indian civilization, that India is only a name for certain geographical territory, nothing that connects us, unites us from like Kashmir or even Kailash to Kanyakumari. What a blind study of history. But to that also, competent answers have always been given. Our problem is, especially in post-independence time, this field of study of history
So the precise name would be historiography. That was politicized and monopolized by leftist historians. And that too, all the time there have been competent answers. I could narrate one after another historians who have set the record straight, but using political power, using government decisions and all, they were all sidelined. Shrikantji, you started interacting with me by saying, okay, बच्चों के साथ मेरी वार्तालाप होता रहता है. History is important because it defines our self-image, who we are. और अगर जहां एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक बना रही है उसका शीर्षक है आवर पास्ट, प्लूरल माइंड यू, आवर पास्ट, ये मैसेज है कि कोई हमारा कॉमन नैरेटिव है ही नहीं. यहाँ एक संस्कृति, एक सभ्यता जिसकी धारा हजारों सालों से चली आ रही है, जिस संस्कृति में ऐसी प्रतिभा का अंश है कि समय के चलते वो अपने में बदल भी कर सकती है लेकिन अपनी आत्मा कायम रखती है. ये शक्ति है हमारी. और जो ओरिजिनल प्रतिभा है, द क्रिएटिव जीनियस दैट वी हैव, दैट इज डीप इन आवर हिस्ट्री. द यूज ऑफ वर्ड्स आल्सो हैज बीन वेरी केयरफुल इन आवर हिस्ट्री. सो व्हेन महर्षि वाल्मीकि and Maharshi Vedavyas start by telling us Ramayana and Mahabharata, they are very clear. They mention that as itihas. They are very clear about the usage of word. So for us to develop a true, the history committed to truth, but even I am convinced, I want to say, I know that in fact truth itself will build our self-image, that we have the creative genius. And with the study of history, it's not only for the past, but study of history is to understand the present and do something for the future, to shape the future. I will just close by making just one point. If you and all of us, we believe India, Bharat, as a great civilization and a center of global education for centuries on end, until unfortunately Islamic invasions began, and those Rakshasas started destroying Nalanda, Takshashila, Vikramshila, Amravati, Kanchi, Pratishthan, and everything. Okay? That study of history should give us the self-image and also the confidence to be creative now that India once again becomes the global center of creativity in all walks of life, including education. So, इस पे समाधान मान के नहीं चलना है कि भूतकाल में कहीं नालंदा तक्षशिला थी, वर्तमान में और भविष्य में ऐसी नालंदा तक्षशिला फिर बनानी है जिससे कि भारतवर्ष की महिमा उजागर हो. ये इतिहास का उद्देश्य है. धन्यवाद सबके लिए. धन्यवाद अविनाश जी. अब मैं सीके को कहूंगा. सीके, आपका हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पे बहुत काम है, खासकर कैलकुलस का प्रश्न चिन्ह उठाया आपने और यूक्लिड के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, और जो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स वेस्ट ने बनाई है उसको आपने उसमें आपने कई सवाल खड़े किए हैं. तो केवल 3 से 5 मिनट में, और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैं आपको मॉडरेट कर रहा था, मेरे को बाद में बताया गया कि मेरे को आपको सुनने का इतना शौक है, मैं आपको रोकता नहीं हूँ जब आप बोलते हो, तो इसलिए आपको आपको 5 मिनट दे रहा हूँ. 3 से 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे. थैंक यू वेरी मच. तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ. ये जो कह रहे थे कि हिस्ट्री इज अबाउट द फ्यूचर, तो उसमें जो क्रोनोलॉजी है उसमें उसका बहुत कम रोल है. और आर्यन रेस कंजेक्चर पे मेरी किताब है, उस पर और भी कुछ बोलने वाला हूँ, यहाँ पे आज नहीं बोलूंगा. मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो कन्वर्सेशन हो रहा था कल, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ. उसमें क्या बात है कि एक चाल है हिस्ट्री के बारे में, सरल सी चाल है जो हम कभी समझे नहीं, शायद ही समझेंगे क्योंकि इतने विद्वान लोग बैठ के बात कर रहे हैं, किसी ने ये बात उठाई नहीं कि जो चाल है, चर्च की चाल है, वो बाइबल के बारे में नहीं है, उसको हिस्ट्री को फिलॉसफी से मिला दिया और ये बात हमारे समझ में नहीं आई.
और मैथमेटिक्स में खास तौर से हिस्ट्री को फिलॉसफी से मिला दिया है। और ये अगर हम देखेंगे बहुत सरल चीजें, आप अपनी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक खोल के देख लें, नहीं खोल के देखेंगे, 6 साल से बोल रहा हूं, नहीं खोल के देखेंगे, आपने पढ़ी नहीं और शायद अभी भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं कि उसमें साफ साफ लिखा है कि हम क्या सोचते हैं हिस्ट्री में, किसने पहले किया, कौन पहले, हमने पाइथागोरस थ्योरम पहले प्रूव किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किताब कहती है 9वीं की किताब कि हाँ किया, आपने किया, बेबीलोनियन ने किया, सब ने किया, लेकिन हमने उससे बेटर किया, उत्कृष्ट मैथमेटिक्स किया, श्रेष्ठ मैथमेटिक्स किया, और इसलिए उसको आप सीखोगे। पहले किसने किया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो श्रेष्ठ मैथमेटिक्स क्या है कि मैथमेटिक्स और गणित में फर्क है। 1000 बार बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, बहुत ही सरल फर्क है कि मैथमेटिक्स में प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित है, गणित में प्रत्यक्ष प्रमाण मंजूर है। और मैं उसके उदाहरण नहीं दूंगा, मैं पिछले साल काफी बोल चुका हूं 1 और 1 2 के बारे में वगैरह वगैरह। तो मैं खाली ये बताऊंगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित है मैथमेटिक्स में, और उसको उत्कृष्ट कहते हैं क्योंकि ये चर्च की थियोलॉजी इस पे आधारित थी, क्रूसेडिंग चर्च की थियोलॉजी इस पे आधारित थी। ये कनेक्शन हमको समझ में नहीं आया कि क्रूसेड में यूक्लिड का पूरी तरह से इट इज अ टोटल फॉल्सहुड, a total concoction. Forget that, I mean, I have a book on it. तो आप वो किताब देख सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को ये कहना है कि उसके ऊपर उसके आधार पे आपके ऊपर एक फिलॉसफी थोप दी गई मैथमेटिक्स के थ्रू। बाइबल की बात नहीं हो रही है जो मैथमेटिक्स आज की तारीख में हम पढ़ा रहे हैं और जो मैथमेटिक्स आज की तारीख में चल रही है। तो मेरे हिसाब से ये बात हमको समझना चाहिए, और ये बात नहीं है कि बौधायन ने किया या मानव शुद्ध में पहले आया, मानव की तो बात ही नहीं होती है। मैंने उस पर पेपर लिखा है, अभी उसमें नहीं जाऊंगा। तो मैं खाली ये बात फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये खाली हमारा प्रॉब्लम नहीं है, कॉलोनाइजेशन दुनिया भर का प्रॉब्लम है। तो साउथ अफ्रीका में केप टाउन यूनिवर्सिटी में जब वो जला रहे थे यूनिवर्सिटीज को, मैंने एक लेख लिखा, टू डीकॉलोनाइज हिस्ट्री, स्टैंड अप to it, I mean, to decolonize mathematics, stand up to its false history and bad philosophy. Bad philosophy is the important thing. Stand up to it. तो false history क्या है? यूक्लिड, पाइथागोरस, सब false history. लेकिन bad philosophy क्या है? ये समझ में नहीं आया। जो जर्नलिस्ट थे, पहली बात तो उसको सेंसर कर दिया, साउथ अफ्रीका में छापा, वायरल हो गया, खूब सारे लोगों ने देखा, फिर उसको सेंसर कर दिया। सेंसर कर दिया, हिंदुस्तान में उसको रिप्रोड्यूस किया, क्योंकि जो कुछ भी बाहर छपता है हम रिप्रोड्यूस करते हैं, कन्वर्सेशन में छपा, तो वायर ने, स्क्रोल ने रिप्रोड्यूस किया, सेंसर हो गया, तो दोनों ने डाउन कर दिया, फिर वायर ने वापस डाल दिया, अभी भी है वायर में। तो आप देख लें, तो उसमें उनको फिलॉसफी शब्द समझ में नहीं आया, खाली हिस्ट्री के बारे में लिखा है। मैं बोल रहा हूं, मतलब ही नहीं हो, रजिस्टर ही नहीं करता उनके दिमाग में कि हिस्ट्री के साथ फिलॉसफी जुड़ी है, क्योंकि वो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है। हम कौन सा गणित पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये उनके दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हुआ कि हिस्ट्री से ये फायदा होता है। अब मैं क्या कहूंगा, मैं आपको 1-2 उदाहरण जल्दी से दे देता हूं। सैम पिट्रोडा के साथ में मेरा झगड़ा हुआ 2007 में, आपको याद होगा कि वो ये स्टार्ट किया उसने, क्या बोलते हैं, व्हाट वाज दैट, नहीं, सी डॉट तो बहुत पहले चालू किया, 1980 में स्टार्ट। ये नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन, उसने नेशनल नॉलेज कमीशन स्टार्ट किया उसने। तो उस समय मेरे उससे झगड़ा हुआ कि भाई आप आयुर्वेद पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ाते? तो उसका आंसर था, मैनेजर का आंसर, कि भाई हम नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वी हैव द पावर। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, ये कोई बात कहने की चीज है कि वी हैव द पावर देयरफॉर वी विल नॉट डू इट, है ना? तो उसने क्या कहा, उसका दूसरा ये कॉमन सेंस आंसर था, डोंट रीइन्वेंट द व्हील। जो हो चुका है वो आप दूसरों से सीखो। तो ट्रिग्नोमेट्री आप MIT से सीखो। तो मैंने जब MIT में टॉक दिया, मैंने उसको बुलाया, वो आया नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री जो हिंदुस्तान में बनी वो अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, और जो MIT ओपन कोर्स वेयर है उसके समान नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि वहां से अगर आपको कुछ सिखाना है तो आपको सब चीज समझना है। यू हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। अच्छा, ये हो गया सैम पिट्रोडा के बाद। अभी की सरकार क्या कर रही है, उन्होंने कस्तूरी रंगन को लगाया। मैं सैम पिट्रोडा के साथ काम किया सी डॉट में, और कस्तूरी रंगन के साथ भी काम किया। वो स्पेस डिपार्टमेंट में था, रॉकेट के इनसैट 2 सैटेलाइट उसका
आईसेक का हेड था, वो डूब गया। क्यों डूब गया अब आप पूछिए। मैंने बोला था अब उसमें नहीं जाऊंगा, उसको अभी आउट ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, डूब गया क्योंकि उनको प्रोग्राम करना आता नहीं। सारा का सारा प्रोग्राम है फ्रेंच इंडिया से आया हुआ, और उसमें से 200 लाइन कोड उन्होंने लिखा, और मैंने उनको वार्न किया था, जैसे सैम पिट्रोडा का वार्न किया था कि आपका सी डॉट से स्विच से सुपर कंप्यूटर नहीं बनेगा। नहीं सुनी बात, इन्होंने भी नहीं सुनी। मैंने कहा आपका कोड बेकार है, आपका सैटेलाइट अनस्टेबल है, वो गिर गया, डूब गया, खैर जाने दी, होती है गलती, लेकिन हम गलती से सीखे कुछ नहीं सीखे। अब इन्होंने क्या किया, कस्तूरी रंगन जी ने, सैम पिट्रोडा ने कहा MIT जाओ, इन्होंने मंजुल भार्गव को अपॉइंट कर दिया, और मंजुल भार्गव क्या प्रिंसटन से, तो क्या फर्क बना, हम वेस्ट में विश्वास करेंगे, हमको नहीं आता मैथमेटिक्स, छठी की किताब नहीं पढ़ेंगे, नवी की किताब नहीं पढ़ेंगे, और हम विश्वास करेंगे एक MIT में, एक प्रिंसटन। तो इन्होंने क्या किया है, अभी पाठ्य पुस्तक निकाली है, तो मैंने जैसे कहा प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित है। ये सबसे पहले चीज छठी क्लास की किताब में, नई किताब निकली पढ़ाते हैं, क्या है, बिंदु अदृश्य होता है। आप बताइए कहां से ढूंढेंगे, और जो रेखा है वो अदृश्य बिंदु से बनी, वो भी अदृश्य होती है, क्योंकि अगर दिखती है तो गलत है। Beware of being deceived by what you see. That is what the 9th standard text says. Don't beware of what you are told. Believe everything that you are told. ये साइंस है क्या, किस तरह का साइंस है, ये जियोलॉजी है। तो ये बकवास चीज है, और ये हम सिखा रहे हैं बच्चों को आज की तारीख में, ये कह के कि उत्कृष्ट है, अदृश्य बिंदु उत्कृष्ट है, क्योंकि आप देख नहीं सकते, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। तो ये जो बात हो गई, ये मैं कहना चाहता था। एक चीज और मैं जल्दी से कह दूं, सीखे समय हो गया, जस्ट वन मिनट, कि ये जो आज की तारीख में ये जो UGC ने चालू करके रखा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमको दूसरे की बात नहीं जानना, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि श्रेष्ठ कौन सा है? आपको पूर्व पक्ष का खंडन तो करना पड़ेगा, तो आपको मैथमेटिक्स की फिलॉसफी जानना जरूरी है, नहीं सीखेंगे तो ये जो है UGC ने 2-3 बहुत सारी गलत चीज करी है। इस पे मैं भाषण दे चुका हूं, उसका वीडियो अवेलेबल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग में कीनोट किया 1-2 महीने पहले, और वो आपको मिल जाएगा, ये वीडियो में है। तो इसमें क्या है, इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स डाल दिया। अब आपको मालूम है ये इसके खिलाफ मैं बहुत साल से लिख रहा हूँ, बाद में लिख रहा हूँ कि ये वैदिक नहीं है, इसका वेद से कोई संबंध नहीं है। आप धर्म की बात करते हो, आपको सत्य होना चाहिए, नहीं तो आपके धर्म का सत्यानाश। तो सत्य बात तो कहें कि इसका वेद से कोई संबंध नहीं है, नहीं कहना चाहते। तो ये बात कई बार कह चुके हैं, सबको मालूम है, इसको छोड़ देता हूं। दूसरी चीज जो उन्होंने की है वो की है कि हमको ज्योतिष के बारे में बात करना, और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये देखिए, ये बात मुरली मनोहर जोशी ने चालू की थी 20 साल पहले, और उसका हमने वो अपोजिशन किया था, मैं, राजा रमन्ना और ये अपना सॉरी भूल रहा हूँ उसका नाम, तीसरा अपना CCMB का जो डायरेक्टर था। तो हम बैठे और एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में डिबेट करना, 20 साल पहले की बात है, 16 यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स खोले। मैंने कहा ये मेरे पास में वेदांग ज्योतिष है, अब आप इसमें से एक वाक्य दिखा दो मेरे को फलित ज्योतिष का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी होती है फलित ज्योतिष, ज्योतिष है काल विधान शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो उसके आधार पर 16 यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स खोल दिए, वो दिखा नहीं पाए, पूरे इंटरनेशनल प्रेस के सामने ये बात हुई। तो उसके लिए अब क्या करना है सोचें, तो उसके लिए क्या करना है आप सोचें। तो मैंने तो सोचा कि भाई मैं तो हार गया, इनसे लड़ नहीं सकते, तो मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। और मैं जो कर रहा हूं, मैंने इसके ऊपर एक किताब लिख दी, इंडियन कैलेंडर साइंटिफिक एस्पेक्ट, ये अभी गूगल प्ले में है एज प्री लॉन्च बुक। और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, क्योंकि हमारी जो पद्धति थी वो साइंटिफिक थी, ग्रीक पद्धति नहीं थी, सुपरस्टिशियस थी। तो हमारी जो पद्धति है उसमें जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उनको हमको लाना चाहिए। केपलर वाज आल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, लेकिन आप उसकी एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं सुनते, आप केपलर लॉस ऑफ मोशन सुनते हैं। तो हमको ये करना है। ओके, थैंक यू, सॉरी आई टुक टाइम, बट आई थॉट यू वुड बी इंटरेस्टेड। No, I'm very interested. That's the problem. So एक्चुअली मैं दूसरा इसका पहलू थोड़ा सा लाना चाह रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये हमारा टॉपिक एम्बिगुअसली डिफाइंड था, और इसमें जो एजुकेशन की हिस्ट्री और एजुकेशन की स्थिति पे भी थोड़ा सा समय
लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ इतने विद्वान बैठे हैं यहाँ पर। और मैं एक चीज छेड़ देता हूं, ये सोचो आज की हमारी क्या स्थिति है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, हमारे विद्यार्थी बाहर जाके पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे विद्यार्थी विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज करता है। वहां जाकर किससे पढ़ते हैं? काफी मात्रा में, काफी प्रतिशत प्रोफेसर जो हैं वो भारत के हैं, यानी कि हम भारत से स्टूडेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, भारत से प्रोफेसर्स को भी एक्सपोर्ट करते हैं, और भारत से फॉरेन एक्सचेंज को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस पिक्चर में क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है कि एक समय में भारत ही जो शिक्षा का विश्व गुरु था एक प्रकार से, सब पूरे विश्व से लोग भारत में शिक्षा लेने आते थे, चीन से लोग शिक्षा लेने आते थे, यूरोप से लोग शिक्षा लेने, ग्रीस से लोग शिक्षा लेने आते थे। और अब ये समस्या हो गई है कि हमने मान लिया कि अथॉरिटी वो है, स्टैंप वो करेंगे, और उनकी स्टैंप लगने पर ही हमारी शिक्षा है उसको वो माननीय होगी। और दूसरी जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो धर्मपाल जी की पुस्तक है, आप बहुत लोगों ने यहाँ पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो अवश्य पढ़िए, द ब्यूटीफुल ट्री, जिसमें उन्होंने, बल्कि संदीप भी बोल रहे थे, जो अर्ली यूरोपियन अकाउंट्स हैं उनको आप पढ़िए, उसमें भी जो अर्ली ब्रिटिश अकाउंट्स हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि कितना वाइड स्प्रेड एजुकेशन सिस्टम था भारत में, जो कि बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, और उसकी जगह हमने ये डिटरमिन किया कि ये स्कूल का ये होना चाहिए, फेंस होना चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, ये होना चाहिए, उससे आपने विद्या को डिफाइन किया। और guess what, the RTE defines it in exactly the same way that the British had defined it 100 years ago, and Gandhi ji had criticized it at that time, saying कि ये शिक्षा इससे नहीं डिफाइन होती कि कितने कमरे हैं और कितने फैंस हैं और कितने बाथरूम हैं, ये आप पेड़ के नीचे भी शिक्षा और विद्या का ग्रहण कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा सबसे सुनेंगे, और जो भी आपकी रुचि है उसके बारे में भी। हमारे पास केवल 25 मिनट से भी थोड़ा कम है, तो मुझे लग रहा है अगर 2-3 मिनट में अगर अपनी बात रखें, उसके बाद थोड़ा सवालों के लिए भी समय हो जाएगा। उधर से ही शुरू कर लेते हैं। वेट, आपसे राज जी। Okay, so very quickly, let me bring the topic back to history in education. So I'll quickly give anecdotes with my experience in reviewing textbooks, history textbooks in India. I worked with 2 states during 2017 and 18, and 1 state in the United States. And I found, to my shock, with the 6th, 7th, 8th, 9th, 10th grade, 10th standard textbooks, full of toxic content. In fact, in one particular state, one particular standard textbook, I wrote in my review, this looks like a Maoist training manual. That's how it appeared to be. So many corrections had to be made in those textbooks. And I'm very, very glad that now we have started on the NEP policy. There's a national framework, curriculum framework, as well as there is a education policy over there. So now NCERT has just brought out the 6th grade textbook, the new 6th grade textbook, and I'm reviewing that at this time. I'm happy to say that the toxic content has gone. The toxic content that was a story at the earlier time, that has gone. So earlier, where every page I'd find about 5 to 6 issues, that is no longer there. But it has been replaced with errors. There are many errors, ignorant errors about a civilization, who we were, and the correct references to give over there. So what we find is there's a vacuum. Once you remove out this Marxist and socialist content out, what do you put back there? That authentic scholarship is missing. So I'm glad to say the dialogue has moved on from toxic content to that of let's correct what is in there. It's a good sign. Bottom line, it's a good sign, but we have our homework to do, a whole lot of homework to make sure that authentic information reaches the textbook writers. Thank you. Nilesh. नमस्कार। जो संक्रांत जी ने प्रश्न पूछा उसी के संदर्भ में एक कल राउंड टेबल होने वाला है 3:30 में, थोड़ा सा रिलेटेड ही है कि क्या हम हमारे बच्चों को बाहर के देश में, विशेषतः यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसा जगह भेजे या नहीं भेजे। तो उसमें मैं कल भी वो पैनल पे हूं तो मैं उसमें बात करूंगा।
लेकिन अभी मैं 2 पॉइंट क्विकली बताना चाहता हूं कि जो इतिहास है और एजुकेशन भी है। तो वही कॉन्फ्रेंस पे, ऑक्सफोर्ड कॉन्फ्रेंस पे बात करते हुए तब तो मैं बोल दिया उनको कि हमारे पास हिस्ट्री नहीं है लेकिन इतिहास है। पर उसके बाद मैं जब सोचने लगा तो मेरे समझ में आ गया कि सिर्फ ये बात नहीं है। तो अभी जो पूरा विश्व में जो साक्ष्य उपलब्ध है उसमें सिर्फ भारत देश ऐसा देश है कि जिसके पास इतिहास है। सो इनफैक्ट मैं लेक्चर देता हूं कि व्हाई ओनली इंडिया हैज इतिहास। उसके लिए 3 बातें हैं। एक ऐसी है कि आपको आज कुछ हो रहा है उसको लिख के रखना है, तो आपके पास ऐसी एक समृद्ध भाषा चाहिए। इंग्लिश में कहे तो एबल एंड केपेबल लैंग्वेज। बट और एक बात चाहिए कि विच हैज अ लो टू नो ड्रिफ्ट, कि उसमें ज्यादा फर्क नहीं होते। इसलिए हमें 7,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, 20,000 साल पहले जो कुछ हुआ लिखा है वो आज भी हमें समझ में आ सके। दूसरी बात ऐसी है कि इतिहास यानी कि एक सर्टन टाइम में हुआ पूर्ववृत्तम, तो उसको टाइम स्टैम्प चाहिए। हम अभी आपको टाइम स्टैम्प में इंपॉर्टेंस है कि नहीं ये आपका रिलेटिव ओपिनियन हो सकता है, बट ये व्यास जी और वाल्मीकि का ओपिनियन नहीं है जिन्होंने इतिहास लिखा। उन्होंने इतना टाइम स्टैम्प अप्रोप्रिएट करके रखा है और उसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बात है कि एस्ट्रोनॉमी इज टाइम। जैसे कि हम पंचांग देखते हैं तो हमारे एक लाइफ टाइम का हम कर सकते हैं। पंचांग में आप प्लैनेटरी पोजीशन नक्षत्र के अंदर ऐड कर दीजिए तो हमें इतिहास का टाइम स्टैम्प मिल जाता है रामायण महाभारत के लिए। और नक्षत्र को हम कहते हैं नक्षरत इति नक्षत्र, नक्षत्र तो मूव नहीं होते, लेकिन हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इतनी पुरानी है कि उसमें नक्षत्र भी मूव होते हैं। तो जब हमें नक्षत्र मूव होते हैं और उसका हम स्टडी करते हैं तो भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है उसका हमें पता चलने लगता है। क्योंकि दूसरा पॉइंट, मेथड्स के बारे में भी बात हुआ कि मेथड्स अलग है, एटलीस्ट लेफ्टिस्ट लोग हमें कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आई असर्ट इट व्हिच मींस इज बैक्ड बाय एविडेंस दैट देयर इज ओनली वन मेथड। उसके अलग अलग ढंग से उसको बताई जा सकती है। वेस्टर्न मॉडल में आप कहेंगे तो बेस्ट फिलोसोफर ऑफ साइंस सर कार्ल पॉपर, वो कहते हैं इट इज अ ट्रायंगुलेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन टेस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थियरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। वो इतना जो लंबा कहा जाता है वो हमारे भगवान पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं प्रत्यक्षा अनुमान आगम प्रमाणानि, और गौतम ऋषि कहते हैं प्रत्यक्षा अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानि। और भगवान कृष्ण भागवत पुराण में कहते हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान बेसिकली वो साइंस है। आज जो मॉडर्न साइंस कहते हैं वो प्रत्यक्ष अनुमान है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो तो क्वाड्रेंगुलेशन हमें करना है, ट्रायंगुलेशन भी सफिशिएंट नहीं है। श्रुति प्रत्यक्षम इतियम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् स विरज्यते। जब तक ये 4 क्वाड्रेंगुलेशन नहीं होगा तब तक हमारा स्टेबल नॉलेज नहीं होगा। और उसमें तो आपको बार बार मिलेगा, जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा, वो तीसरी बात है कि टाइम स्टैम्प हो गया, लैंग्वेज में लिख दिया गया इतिहास, वो हमारे तरफ एक्यूरेटली कैसा आ जाए। अभी हमारी वीक हो गई है परंपरा, लेकिन अभी भी है कि गुरु शिष्य परंपरा से हमारे पास वो आ गया। धन्यवाद। अभी एक प्रातस्मरणीय जो हिस्ट्री में अंडर एजुकेटेड हिस्टोरियन है रोमिला थापर की बात की। उन्होंने कहा है कि जो अलेक्जेंडर और सैंड्रोकोटस की जो कंटेम्परेनिटी है वो बेडरॉक है इंडियन क्रोनोलॉजी का। ठीक है, ये पता नहीं इन्होंने कहां से उसको बेडरॉक बना दिया। और चलो हम मेगास्थनीज का ही स्टेटमेंट बना लेते हैं, जहाँ जो ग्रीक हिस्टोरियन ने लिखा, अगर उनके भी आधार भारतीय आधारों को आपको विश्वास नहीं है, आपको कोई श्रद्धा नहीं है तो ठीक है। वो इतना ही नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, इंडियंस काउंट 153 किंग्स एंड क्रोनोलॉजी क्या देते हैं 6,451, 6,451 ईयर्स। इसका मतलब है कि मेगास्थनीज भारतीय इतिहास को उनके आने से पहले 6,500 वर्षों का इतिहास गिना रहे हैं। और वो लिस्ट है, अगर आप इक्ष्वाकु वंश की परंपरा देखेंगे तो इक्ष्वाकु से लेके भगवान राम, उसके बाद के भी 100 से ज्यादा पीढ़ियों के वंशावलियां उपलब्ध हैं। उसके बाद फिर हमारे पास मध्यकाल, फिर उसके बाद जो रामायण महाभारत के बीच का मध्य, महाभारत से लेके तो हमारे पास हर एक दिन के पूरी क्रोनोलॉजी उपलब्ध है। लेकिन हम कहाँ इसको सत्य साबित करने में कहाँ भटक जाते हैं, उसका एक मुख्य कारण है संपूर्ण जो कालक्रम का या क्रोनोलॉजिकल स्टडीज के आधार पर मुझे लगता है सबसे पहले हमें बुद्ध तक की क्रोनोलॉजी में एक 1380 वर्षों का एक गंभीर गड़बड़ी हुई है। उसका मूल कारण 3 है।
एक हमने एक शक संवत और जो प्राचीन शक संवत है दोनों को एक मानने की वजह से 660 वर्ष की एक गलती आई है। उसके बाद बुद्ध और महावीर कंटेम्पररी हो गए। उसका कारण यह है, एक उज्जैन का चंद्रगुप्त था, वो मालव गुप्त वंश का, जो कि भद्रबाहु का शिष्य बनकर श्रवण बेलगोला में गए थे, जो विशाखाचार्य का नाम लिया था। उनको चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हेमचंद्र ने लिखा है, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे कालक्रम की वजह से, क्योंकि उज्जैन में मौर्यों का शासन तो कभी रहा नहीं। तो ये दो गलती की वजह से 1380 वर्ष आगे आया है, क्योंकि पौराणिक जो क्रोनोलॉजी है उसके आधार पर महाभारत से लेके महापद्मनंद तक 1500 वर्ष है, तो बुद्ध नंद से 200-300 वर्ष हुए, तो बुद्ध और महाभारत के बीच में 1200 वर्ष या उससे ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अगर सबसे पहले पहला स्टेप है बुद्ध तक की क्रोनोलॉजी ठीक करने पर, जो आदि शंकराचार्य की तिथि है 6ठी सदी बीसी के, बुद्ध शंकराचार्य के बीच में 1300 वर्षों का अंतर। तो हमें क्रोनोलॉजी को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में 2+2 = 3 पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसका समाधान कैसे करेंगे ये बहुत ही क्लिष्ट विषय है। लेकिन ये करना, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्रोनोलॉजी एस्टैब्लिश की है, वो सर्वथा असत्य है, लेकिन उसे सत्य साबित, हमें जो पारंपरिक क्रोनोलॉजी की सत्यता साबित करने के लिए बहुत परिश्रम करना है। हो सकता है हमें पूरे विश्व की क्रोनोलॉजी को रिकॉन्साइल करना पड़े, तो हमें करना है एक। और दूसरा, बुद्ध से पहले के लिए हमें एक वैदिक कैलेंडर को रिकंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि आप वेदों को पढ़ के देखेंगे, उनको सारे नक्षत्रों का ज्ञान था और एक उन्नत कैलेंडर का प्रयोग कर रहे थे। क्या हम एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, तो हमें एक कंटिन्यूटी है कैलेंडर की, उस कैलेंडर को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये एक दिशा है, उस दिशा में हमें काम करें तो भारत की प्राचीनता और भारत के कालक्रम की जो सत्यता है उसे हम स्थापित करेंगे। तो तब एक राष्ट्र का जो आत्मविश्वास है, जो 300-400 वर्षों में कहीं खो गया है, वो पुनः स्थापित हो सकता है, क्योंकि ये आत्मविश्वास बहुत चाहिए, वो इतिहास के माध्यम से ही युवा जनरेशन में आता है। Sandeep. Yeah, thank you. So I'll just give a few broad outlines. I didn't, kind of in the flow, didn't address the main topic. What is that? Education in history or history in education? Okay, so overall, speaking in an overall sense, education system as a whole has been slaughtered by slaughtering history. जिसको आप social sciences, humanities कहते हैं, that whole department has been slaughtered. It is a handiwork, it is a single-handed work of our favorite friends. You're my left, so leftists. So what they have done, the extent of their destruction is that in many cases it is irretrievable. So what has happened is, by destroying something, at least if you had left something to, recover, they haven't done that also. Classic example is that even today, after 10 years of a nationalist government, I'm not a political person, or, either way, it doesn't matter. What has happened in the last 10 years is a singular overlooking of a very important story of our times, which is the fact that why don't our history textbooks and social studies textbook, why don't they tell us the full story and nothing but the true story of the real face of communists? जो chapter 4th है ना Indian communists के बारे में, completely sanitized. How are they celebrated as revolutionaries? जो समाज का सेवा करता है, this kind of nonsense. Why is the story of their slaughter of Indian history not told in the last 10 years? It is a very, very important area that our children should be taught. And why they are not taught? Because the same scoundrels were writing textbooks all the time. For the last 60-70 years, do we uska period le sakte. So how this destruction of history plays out in real life? I'll give you one simple example. वो जब काशी का excavation का जो debate चल रहा था TV में, all your mullahs and the other side, they'll come and say this belongs to us, this same story. And one of the things they use in order to justify Aurangzeb's destruction of the great Kashi Vishwanath original temple
is that, some Hindu Raja under Aurangzeb allegedly molested one of the wives or concubines of Aurangzeb, so he destroyed that. This is a story. ये story किसी Islamic primary source में आपको नहीं मिलेगा. It was an invented, fabricated, concocted story by these Marxist fellows. And the mullahs on TV use this raw material supplied by the Marxists. ये क्यों नहीं बताते? So you see at what levels they have, done the damage. And all I can say is that this humanities department, जो उनको चला रहे ना, this whole department of history and humanities, it is basically a national ordinance factory for producing generational traitors. And we have psychos who are masquerading as teachers, who are in turn creating terrorists. All these are, जो JNU था पहले, अभी अशोका है, TISS, they are multiplying from within. And they have a legacy of, the Marxists have a legacy of doing this for what, 100 years, nearly 100 years, if not 80. Real history, on the other hand, you will find it in different accounts and what are dubbed as, oral traditions and legends. There's a beautiful story related to the 17th century or early 18th century. Very touching story. It's a real life incident where a very old man in Kashi, so his lifelong ambition is to have his, take Ganga Jal and immerse it in Rameshwaram. So he gives it, and he's bedridden almost on his, last legs. So he gives a bit of Ganga Jal to his servant, who in today's time would be classified in government records as a Dalit. And he tells him, ki, Dekho, I'm anyway going, it is your duty to take this Ganga Jal and in my name you immerse it in Rameshwaram, in the ocean, in the sea. So, ye kya baat kar rahi? We are oppressed for thousands of years. See, there are so many of these myths that will get shattered if you look at such what is mistakenly known as oral legends and dismissed as, fabrication and, creations. That's what I'm saying. Read the history of India for the last 250 years. You have lost access to that society, and it's still not too late to recover this. You have to reconstruct our past, reclaim our past, recover our history, to recover our narrative, and this should today happen urgently at the level of the home. Please teach your children these things. No textbooks will teach you. Thank you, sir. Just two minutes each, and then we'll take Since some. this is meant to be concluding remark, I have jotted down 4 very specific points to be quickly shared with everyone. One I thought of, I didn't have to separately think of. I was remembered of the great scientist Jagdish Chandra Basu. I think everyone is hearing? Yeah. Jagdish Chandra Basu scientifically proved that plants also are alive and that they have emotions. When he was asked, how did you even think of this idea? And eventually, how did you prove this? He said, I didn't do anything new. My civilization tells me that everything is conscious. So now modern physics is approaching consciousness studies. But this will be a great lesson that while we are to be deep-rooted in our civilization, here we are to study the history, being in the present, to shape our future with the creative genius of Indian civilization. Second point is about setting, developing, studying what can be described as the grand narrative of Indian history, the grand narrative of Indian civilization, that there is one Bharat, that there has always been one Bharat, and here is now modern Bharat shaping up to share its own role in the whole world. So the grand narrative of our history with deep study
and of course scientific evidences and documents and doodh ka doodh aur pani ka pani. Third point automatically emerges from the second point about grand narrative is because forces inimical to our civilization, forces inimical to our nation have now coined the term South Asia. So they are also not using even the term India, come on. That the so-called Harvard expert in Bharatiya Itihas, Michael Witzel, one of the proponents of Aryan invasion theory, he explains the Dasharatnya war story in Rigveda and then says, I'm quoting verbatim, he says, this is how the first state in South Asia was born. The guy is wrong on all points. This is not the time to explain details. Bharata winning, the Bharata Kula winning Dasharatnya war is not the first state in ancient India. But Michael Witzel would have us, and then their cronies now come up with the term South Asia. It is meant to deny, demean, downplay India, Bharat. We should not fall for that. And lastly, I thought of what could be better than reminding the very definition of education as done by Swami Vivekananda. Before I narrate that sentence, let me take the pleasure of saying that he just translated original Sanskrit understanding, realization into English. So Swamiji's definition is, education is manifestation of perfection already in man. So our idea is man has perfection. Education means the one that makes us realize that that is within you, कि अपने अंदर है, तुम अपने आप को पहचानो. So the whole education based on knowledge of self, again rooted in Bharat, has the universal application, will take us to the bright future in which I personally sincerely believe. Thank Thank you, you. Avinash. Definitely, this word South Asia, we have to be very careful about, especially in the US. It is completely and deliberately intended to erase India. And I've written an article on this. So CK को मैं प्रश्न के साथ ही दे रहा हूँ. Can I just respond to a couple of points? Yeah, I think, I'm going to give you one more point to respond to, so you can weave it in. So one of the questions that they've asked is, and I think CK would be great to answer it, which is that why did, what sort of magical pill did the Europeans have that they became the gatekeepers of mathematics and science? And also, according to this, the other one, which is the Western agenda of establishing Christian civilization as the only reality, do you think it is mainly to claim all the scientific achievements on which the world evolves and put an end to Bharatiya scientific scriptures? So you can weave those. Okay, so let me start with the one statement with which I very strongly disagree, which Dr. Rajvedam made, that the toxic material has been removed from the class 6 text, which has been recently produced by Manjul Bhargav. So in the US, 6 standard text in India. In India, this Yes. and the new NCERT textbook history. Only, sorry, social studies. Okay. Only So social in studies, India, not the mathematics. toxic material is very much there because Mr. Manjul Bhargav talks of invisible points and invisible lines, and anybody who thinks it is not toxic, I would challenge them to draw an invisible line between two invisible points like this. Sir, it's only So in the it social is- studies, not in the mathematics. Alright. Only So no, social studies. this is, I thought class 6 text, so I have very strong feelings on what has been just produced. The second thing, we are talking of history of education. I think you have to just take a look at the history of education that we follow. What we got from colonialism was church education. Church education has a monopoly on education in the West. There was no secular education until 1870. The first act for secular education at the primary school level was in 1870. All your big universities, Oxford, Cambridge, whatever, was set up by the church. You go to Harvard, the tallest point would be the church steeple. And that used to be the architectural principle of all towns, that the church dominates.
quizzically. So the idea that that is the history of education, we are still subject to that church education. We are not able to break away from it. Now, as to these questions, I'm not sure what the questions were, but the idea that science is created by the West is false. I have a book, Is Science Western in Origin? It is not of recent origin. This was done right from the time of the Crusades, because how did all these universities start? Oxford, Cambridge, why did they start during the Crusades? Nobody asked the question. During a crusade, a religious war, you set up universities. Because they were competing with Muslims and because they wanted to take knowledge which was there in Muslim libraries, especially in Toledo. That knowledge was there from all over the world, including India. And that knowledge they wanted to grab. So they said, this is all ours. The early Greeks did it. There is no sign of early Greeks. The only evidence they have got is from late Byzantine Greek texts from 9th century. There is no evidence whatsoever. Whether it is Euclid, whether it is Pythagoras, whether it's anybody else. I have lakhs of rupees of prizes out there. All right, for proof of Euclid, for proof of Pythagoras, for anything. This is just total fraud history. All right, and what is the next question? I'm just going to ask one more question. Yeah. And this is around the yuga, and maybe one of the people who've done chronology युग, can. yes. हाँ, हिंदू धर्म में काल गणना के लिए युग की परंपरा है. हाँ. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग. इसमें केवल कलयुग ही 4,32,000 वर्ष का है. हमारे पंचांग में कल्प का उच्चारण हम करते हैं. एक कल्प 432 करोड़ वर्ष का है. इस को जिक्र हम कब करेंगे? इस हिंदू वेद आपका? हाँ, ओके. युग जो है वैदिक युग में जब कैलेंडर बना था तो उन्होंने, क्योंकि ल्यूनी सोलर का जो चंद्र का मान है और सौर मान होता है, दोनों का जब समन्वय करते हैं तो उसके लिए 5 वर्ष का समय लिया गया था, क्योंकि 2.5 वर्ष में एक ल्यूनर मंथ का इंटरकैलेशन करके 2 अधिक मास करके, हाँ, तो एक 5 वर्ष का युग एक कैलेंडर वैदिक युग में प्रारंभ हुआ था. तो युग कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ इवेंट होगा, चाहे डायनासोर मरेंगे तभी एक युग समाप्त होगा, दूसरा नहीं, ऐसा नहीं है. युग शब्द जब प्रारंभ हुआ था वो एक कैलेंडर कहलाता जो 5 वर्ष का था. वही कैलेंडर जो है बाद में सूर्य सिद्धांत के बाद इसको युग के लेंथ को बढ़ाया गया, क्योंकि वो एक एक्यूरेसी लाना चाह रहे थे कैलेंडर में. क्योंकि जब आप फ्रैक्शन से डील कर रहे हो लेकिन आपको कैलेंडर में इंटीजर वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक कैलेंडर में एक दिन ऐड कर सकते हो, एक दिन डिलीट कर सकते हो, या एक महीना क्षय मास क्षय तिथि या अधिक मास अधिक तिथि. यही एक मेथोडोलॉजी है जिसके आधार पर आप कैलेंडर को समन्वय करें. लेकिन जब युग लेंथ को एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ाया गया, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए उसको गलती से हिस्टोरिकल टाइमलाइन के साथ मिक्सअप किया गया. जब उन्हीं को 1200 को फिर 1200 को 12,000 किया गया, 12,000 को 360 से जब मल्टीप्लाई किया तो एक चतुर्युग का जो मान है वो 43,20,000 ईयर्स हो गया. लेकिन ये जो किया गया है वो फ्रैक्शंस के आधार पर जब कैलकुलेट करके इंटीजर वैल्यू आपको चाहिए था कैलेंडर के लिए, तो आपने कैलेंडर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी अचीव कर ली थी. लेकिन ये हिस्टोरिकल टाइमलाइन नहीं है. तो आपको युग कैलेंडर कैसे कैसे विकसित हुआ, इसको अगर आप बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा. क्योंकि समय की कमी है तो मैं पूरा डिटेल में नहीं कह पाऊंगा. जी, मैं आखिरी एक सवाल जल्दी से पूछता हूँ. हाँ, एक सेकंड, मैं एक सवाल भी पूछ लूं फिर आप. मेरा आखिरी ही सवाल है, क्योंकि इतने सारे सवाल आए हैं, लोगों ने इतनी रुचि दिखाई है और मुझे लग रहा है कि हम 1 घंटा और चल सकते हैं, लेकिन मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे अभी ये समाप्त करना है सत्र. तो क्वेश्चन है, when Nalanda University was burned down by Khilji, it is said the flames lasted for 6 months. Today, don't you feel that the fire still hasn't gone out, as the school books still glorify and glamorize this? And then another question which is related is, why is Islamic invasion not part of our school curriculum? And it should be history should be presented as is, without distortion or fear of being politically incorrect. Maybe Sandeep ji you can do, and then CK can take. The whole point about Nalanda's burning, it has been erased, and that erasure distorted. There's a claim that Nalanda was obviously these Marxist fellows, they're experts in doing this, whitewashing, downplaying things, and
outright lying and fraud and stuff like that. Abhi, in the specific case of Nalanda, a very great eminence named D.N. Jha, he was the first person to whitewash and even deny the fact that a man named Bakhtiyar Khalji ever existed, or if he existed, he didn't come to Nalanda. The library magically burnt by itself. So this is what these fellows do. And ironically, you have a railway station named Bakhtiyarpur in Bihar. So that is one. And it's part of their modus operandi. And as far as the second part is concerned, why are invasions, Islamic invasions, not part of the books? They are part of the books, except for the fact that they are not portrayed as invasions, they are portrayed as arrivals. Platform क्रमांक के 1, 2, 3, 4 में बाबर arrived into India. So, I mean, this is part of their whole Marxist game plan to subvert our education system, brainwash 3-4 generations, which which has already happened. And what was the other part, Sankrant? नहीं यही था. This is यही था. something. Yeah, so that's the brief answer. I've gotten We have run out of time. we've gotten yeah. a final warning of being out of time. Yeah, she's So- giving us dirty looks. So I'm going to I think we'll announce wrap the up best question. just हाँ एक one- सेकंड मैं one- उनको आ one जाने point. दो आप बुलाएं. अच्युत कुलकर्णी पुणे का बेस्ट क्वेश्चन है युग के बारे में क्योंकि हमारा ये सवाल रहता है. प्लीज आगे. हाँ. Yeah, about Yug itself, of course, I agree that the large numbers as compared to the Vedic notion of Yug are because of precise fractions. I believe I stated that point. But there is also another aspect that the large figures, they are cosmological figures. If you take a Kal, which is a day and night of Brahma, it is 8.64 billion years, which is a cosmological figure, and we should not forget that. So the yug has been done differently. For example, Aryabhat has all equal yugs, but the cosmological aspect is very important because this is the largest figure that we have got, which is a cosmological figure not found in any other culture. So let's take into account that it may truly be a cosmological Might be figure. both actually, right? Yeah. Thank you so much, CK. And we get Achyut ji. System series, part of Indian Knowledge System series, the history and culture of science in Bharat. Thank you to all the esteemed panelists. Namaskar. इस चौथे सत्र के स्पॉन्सर रहे अनामिका, पार्टनर विजेंद्र मिश्रा, डायमंड पार्टनर कलायन आर्ष विद्या प्राइवेट लिमिटेड. चौथे सत्र में हमारे साथ